Now let us see the third classification of plants that is based on the types of roots before. That let us understand what is a root. The root is the underground non-green part of the plant that grows below the soil. It helps the plant to absorb water and minerals and also anchors the plant in the ground. रूट्स प्लांट का वह पार्ट होता है जो ग्राउंड के नीचे होता है. यह ग्रीन नहीं होता और प्लांट को मिट्टी में स्ट्रांगली पकड़कर रखता है. यह वाटर और मिनरल्स को मिट्टी से लेकर ऊपर के पार्ट्स तक पहुंचाता है. Based on different types of roots, plants can be classified into two groups. First, taproot system. A taproot is a type of root system where one main thick root grows deep into the soil. From this main root, many smaller side roots called lateral roots grow in different directions. Tap roots help plants to stand firmly and absorb water from deep inside the soil. It is usually found in dicot plants. Plants with taproots usually have reticulate venation in their leaves. Examples: carrot, neem, mango, mustard, hibiscus. टैपरूट वह रूट सिस्टम है जिसमें एक मोटी मेन रूट सीधी सॉइल में नीचे की ओर बढ़ती है. इस मेन रूट से कई छोटी छोटी रूट्स जिन्हें लैटरल रूट्स कहते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में निकलती हैं. टैप रूट प्लांट को सॉइल में मजबूती से पकड़ती है और डीपली वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है. यह रूट सिस्टम जनरली डाइकॉट प्लांट में पाई जाती है. ऐसे प्लांट्स की लीव्स में जनरली रेटिकुलेट विनेशन होती है. सेकंड, फाइब्रस रूट सिस्टम. ए. Fibrous root system has many roots of similar size coming out from the base of the stem. There is no main root. These roots spread out in all directions near the surface of the soil. Fibrous roots help to hold the soil tightly and prevent soil erosion. It is usually found in monocot plants. Plants with fibrous roots usually have parallel venation in their leaves. Examples: wheat, onion, grass, maize, banana. फाइब्रस रूट वह रूट सिस्टम है जिसमें एक जैसी कई पतली पतली रूट स्टेम से निकलती हैं. इसमें कोई मेन रूट नहीं होती. ये रूट सिस्टम सॉइल के सरफेस के पास चारों ओर फैल जाती है.